Canada's leader of opposition, who has now criticized Canadian Prime Minister Justin Trudeau for meeting and honoring a Nazi veteran और सीधे तौर पे माफी की मांग करी है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से। ये सीधे तौर पे बताया गया है कि वहां के पार्लियामेंट में हुआ, जहां तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया एक वॉर वेटरन को, जो बाद में उनको पता चला कि आखिरकार ये नाजीज की तरफ से लड़े थे। So those details that are now coming in, even when it comes to the opposition leaders who are now demanding that Justin Trudeau accepts his mistake and apologizes publicly, because this is coming across as a major embarrassment for Ottawa as far as the Canadian lawmakers who gave a standing ovation to a man who was introduced as a war hero after Ukraine President Zelensky's address in the House of Commons, only to later realize that he has actually served in the Nazi unit during World War II. ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये कितनी एम्बैरेसमेंट की बात हो सकती है कनाडा के लिए, क्योंकि वहां पे दो ग्लोबल लीडर्स वहां पे मौजूद थे और उनको आखिरकार पता नहीं था कि ये वॉर वेटरन का बैकग्राउंड आखिरकार क्या था। Well, this is what happens when you do things without doing a proper background check or taking a briefing, particularly on certain people or certain incidents. And we have seen Justin Trudeau doing it very often nowadays. And the way this war veteran was given a standing ovation, for Ukrainians, he might be hero, but for the Jews all over the world, he was a Holocaust soldier. And the way now the background has come to light, and the House of Commons Speaker had to come out and apologize for this, showcases that the Liberal government that is in Canada right now is trying to do everything to ensure that they get their votes intact before the elections next year. But whatever they're doing is falling flat and actually, backfiring them, and this is the latest addition to that. जी, लेकिन ऋषभ, ये जहां तक अगर हम बात जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला है दिस वॉर वेटरन को, जिस तरह से उन्हें पेश किया गया था वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में, सीधे तौर पे ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी ये मुद्दा उठा लिया है। विपक्ष के जो पार्टी लीडर है वो जस्टिन ट्रूडो से सीधे माफी मांग रहे हैं। Well, definitely. If you see, the Conservative Party has raked up this issue and now believe that Justin Trudeau, by doing what he did inside the parliament, by giving a standing ovation to a war veteran, quote unquote. But the problem is which war it was in. It was the Second World War, where this gentleman was actually fighting for the Nazi Germany, and that is something. और जो माफी सामने आ रही है ऋषभ, लेट्स ब्रेक दैट स्टोरी एज वेल फॉर आवर व्यूअर्स। दिस इज एज फार एज द हाउस ऑफ कॉमन स्पीकर इज कंसर्न्ड, एंथनी रोटा saying that the decision to invite a Ukrainian veteran who served in a Nazi military unit in World War II to Zelensky's speech was entirely his own. And I particularly want to extend my deepest apologies to the Jewish communities in Canada and around the world. Those are the details that are now coming in, क्योंकि अब सीधे तौर पे जो माफी आ रही है ऋषभ, वो वहां के स्पीकर की तरफ से आ रही है, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर की तरफ से आ रही है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि आखिरकार ये जो वॉर हीरो जिससे उसकी तारीफ कर रहे थे, उनका आखिरकार बैकग्राउंड क्या था। That is a problem. Justin Trudeau comes to India. At his banquet, there is someone who is wanted in murder case in India back in 2018. House of Commons host Zelensky. They invite a war veteran without knowing that he was a war veteran fighting for the Nazi Germany and the secret services in 1940s during the Second World War. And that is something that is happening in Canada quite often. They make allegations without evidence. They make they invite people without background check, and this is how things are happening. And तो वहाँ के स्पीकर ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कहा है कि ये एक ओवरसाइट रही है उनकी तरफ से और वो माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गलती पूरी की पूरी उनकी है, लेकिन यहाँ पे विपक्षी दल के जो नेता है वो सीधे तौर से जस्टिन ट्रूडो से माफी मांगने की जो डिमांड है वो रख रहे हैं कि आखिरकार जितनी ज्यूइश कम्युनिटी है उनके जो सेंटिमेंट्स है उन्हें हर्ट किया गया है।